Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss some important MCQs of unit number 10 Optical Instruments class 11 के chapter number 10 है. So let's get started with this video. The first MCQs that we have, the least distance of distinct vision for normal eye is 5 cm, 10 cm, 25 cm और 50 cm. So right answer is answer C. 25 cm जो है वो आपके पास जो है वो least distance है that human eye can see. So C is the right answer. Okay, so next MCQs we have, a light entering into glass prism from air does not give change in velocity, wavelength, frequency और डायरेक्शन. यानी कि जब लाइट जो है वो एंटर हो रही है प्रिज्म में, सो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं हो रही. सो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा. फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती बिकॉज वो सोर्स पे ही डिपेंड करती है. सो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो सेम ही रहती है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. Okay, so next MCQs we have, power of lens of focal length f expressed in meter is given by. So power of length lens जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो आपको मीटर में एक्सप्रेस करनी होती है. उसका रिलेशन है P इज इक्वल टू 1/f. यानी कि अगर आपके पास फोकल लेंथ गिवन है तो आप उसकी पावर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और लेकिन फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए. सो ऑप्शन इज द करेक्ट वन. So next MCQs we have, the image formed by simple microscope has real and inverted, erect and virtual, real and erect और inverted और virtual. So right option है जो option B है, erect and virtual. जो image formed होती है वो erect and virtual होती है. So option B is the correct one. So next MCQs we have, the final image of compound microscope is virtual and erect, virtual and inverted, real and inverted or real and erect. So right option है option B, virtual and inverted. So next MCQs we have, the first person who attempted to measure the speed of light. इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट ली थी स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गलीलियो. Okay, so next we have, for the phenomenon of total internal reflection, the angle of incidence should be equal to critical angle, smaller than critical angle, greater than critical angle और zero. So इसका right option जो हमारे पास ऑप्शन C है, it should be greater than critical angle. So right option is option C. The angle of reflection should be equal to greater than critical angle. So next MCQs we have, the refractive index is given by n is equal to, so formula है refractive index का, n is equal to C/V. So option B is the correct one. सो नेक्स्ट वी हैव, फॉर ग्लास क्रिटिकल एंगल, इस ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपने बतानी है. सो क्रिटिकल एंगल बताना है 41.4 डिग्री, 41.6, 41.8, 42.2. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 41.8 डिग्री. So next MCQs I have, microphone converts electrical signal into sound, electrical signal into light, electrical signal into electrical signal or sound signal into electrical signal. So right option is option D. It converts sound signal into electrical signal. So option D is the correct one. So next MCQs we have, the final image seen through the telescope is real, enlarged and inverted, virtual, enlarged and erect, virtual, enlarged and inverted or real, enlarged and erect. So option C is the correct one. It's virtual, enlarged and inverted. So last MCQs we have, magnifying power of telescope is FE by FO, FO by FE, FE FO, 1/FE FO. So option B is the correct one, FO by FE. So right option is option B. So hope so you like the video, and if you have any question then please let me know in the comment section below, and don't forget to subscribe this channel. Stay blessed.